Good morning, student. Welcome to Gyanbharati Junior College of Science, Gurgaon. So, in the last offline lecture, we have seen that the principle of the potentiometer. After that, we have seen the applications of the potentiometer in order to determine the comparison of the EMF of the two cells, or we can say in order to determine the EMF of a cell. So this is the third application of the potentiometer. Here the third application is determination of internal resistance of a cell. तो ये क्या है, इसमें अपन इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करते हैं, फाइंड करते हैं काय का, सेल का, जो भी सेल दिया रहेगा अपन को. सेल्स मीन्स द लैगलैंड सेल और द डैनियल सेल, जो भी अपन सेल यूज करेंगे इसका क्या करेंगे अपन इंटरनल रेजिस्टेंस यूज करेंगे. So for this, here is the diagram. So this diagram consists of the several meter long wire of the potentiometer. So A to B, this is the several meter long wire of the potentiometer which is placed on the wooden board. Here to the one end, that is AA, the source of EMF E is attached, is connected. Means positive terminal of this driving cell is connected to the point A, whereas the negative terminal of the driving cell E is connected to the key K1, and the second terminal of the key K1 is connected to the rheostat. So here the rheostat is nothing but the one of the kind of the resistor, and here and this rheostat is connected to the second terminal of the potentiometer wire, that is B. Again here at the point A, the cell E1 of which the internal resistance is to be determined is connected in parallel with the key K2 and the resistance box R. So here the positive terminal of the cell E1 is connected to the point A, whereas the negative terminal is connected to the galvanometer C in parallel with the key K2 and the resistance R. Here the combination of the two branches is connected to the galvanometer, and next terminal of the galvanometer is connected to the sliding jockey, which can slide from the potentiometer wire. So here is the source of EMF. K1, K2 are the keys. RH is the rheostat. E1 is the cell of which the internal resistance is to be determined. R is the internal resistance. Capital R is the resistance from the resistance box, and then J is the sliding jockey. So here working, what we have done is this working. अब क्या करेंगे हम? In the first step, you have to connect here the key K1 in circuit. Means here first is K1 is close, K1 क्लोज रखना है, और ये K2 जो है ये क्या करना है, ओपन रखना है. K2 is open. When this K1 is closed and K2 is open, it means that there is a cell of which is small r is the internal resistance of the cell. अभी internal resistance क्या होता है? The resistance suffered by the chemical composition of the cell is called as the internal resistance. ये बाहर से जोड़ा नहीं होता. बाहर से जोड़ा क्या होता है? जो भी वायर है रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसे बोलेंगे अपन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. बट ये क्या है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस हवा विद द सेल है. ऐसा ये पूरा सेल है कंप्लीट यहाँ. ठीक है, तो क्या हुआ? मींस व्हेन K2 is open and K1 is closed, here the E1 is in circuit now. This cell E1 is in circuit now. Therefore, here the current will be flowed to the circuit like this, and the direction of the current is shown. Means the E1 से करंट आएगा, ये E से भी करंट आएगा, और वो कहाँ बहेगा? Through the potentiometer wire. Means you have to here obtain the null point. When cell E1 is in circuit, means K2 is open, K1 is closed. Obtain the null point such that the galvanometer shows the zero deflection in it. So here
suppose for this E1 according to the principle of the potentiometer, E1 is directly proportional to the what length. L1 is obtained, suppose यहाँ पे L1 आपका length हुआ. Therefore यहाँ पे E1 is equal to that is some constant, that is the potential gradient kb बोल सकते हैं. Therefore here that can be taken as the unity or that may be cancelled again. Therefore here k into L1, this is your equation number first. ये कब की बात है? जब मैंने क्या किया, E1 is in circuit when K2 is open and K1 is closed. अब क्या करते हैं, अब ये K2 को भी क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, और ये K1 को भी क्या करते हैं, क्लोज करते हैं. मींस सेकंड ऑब्जर्वेशन इज हियर, मींस फॉर K1 and K2 are क्लोज करते हैं. जैसे मैंने दोनों की K1 और K2 क्या किया, मैंने क्लोज कर दिया, तो फिर सर्किट क्या हुआ, मींस ये E भी सर्किट में है, E1 अगेन इन सर्किट, अगेन K2 इन सर्किट, रेजिस्टर बॉक्स इन सर्किट, एंड पोटेंशियोमीटर वायर is in circuit with the resistor. The complete circuit is here when K1 and K2 is closed. अगर अपन करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय द V is directly proportional to the IR or V is equal to IR upon equation. V is equal to IR means यहाँ पे V is equal to IR हुआ, V is equal to IR लिख देते हैं, V is equal to IR. अब क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए कि K is equal to 1 है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये फार्मूला हो जाएगा अपना, मैं यहाँ पे करेक्शन करता हूँ, E1 is equal to L1. Therefore this is your equation number 2. अब क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 by 2 क्या कर देते हैं. Therefore E1 upon V is equal to क्या हुआ, L1, बट लेकिन क्या था, V1 इक्वल टू आया था, लेकिन इसके पहले क्या होता, ये आपको क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस. जब V है तो V slide the jockey on the potentiometer wire and you will get what, the null point. मींस यहाँ पे अपन ने लिया था, कुछ बात नहीं है. अगेन V is equal to that is directly proportional to L2 and L2 is the balancing length, L1 is the balancing length when K2 is open, but here L2 is the balancing length when K2 is closed. मींस यहाँ पे क्या क्या सेकंड में अपन K1 क्लोज, K2 क्लोज और रेजिस्टर बॉक्स से कुछ रेजिस्टेंस निकाल दिया, suitable value of the resistance is taken from the resistance box and obtained the null point. Therefore here for that value which V is equal to is directly proportional to L2, where L2 is the balancing length. Therefore again here V is equal to some potential gradient and the constant into L2. This is your equation number 2. So here divide the equation 1 by 2, it will give you what, divide equation 1 by equation 2. Therefore E1 upon V is equal to K into L1 K into K2. मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे ये K कट जाएगा, इस कट जाएगा, इसका मतलब ये रीजन भी किया था. Therefore this K cancel, therefore you will get here E1 upon V is equal to L1 upon L2. This is your equation number 3. Therefore here this is the ratio of the EMM of the cell E1 and the potential difference between the 2 points of the potentiometer wire. This ratio E1 upon V is equal to L1 upon L2. L1 upon L2. अब क्या करते हैं, यहाँ पे मान के चलते कि यहाँ पे लूप फॉर्म हुआ है, P ये ऐसा ऐसा है, क्या होगा, लूप फॉर्म हुआ. So for this loop अब अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं for the loop कौन सा, P E1 है ना, ये R और T, ये लूप फॉर्म. Therefore applying Kirchhoff's law for this loop, therefore applying Kirchhoff's law for loop, कौन सा क्या लूप, P, ये कौन सा पॉइंट दिया यहाँ पे, दूसरा पॉइंट का नाम दे देते हैं P.
Q S T P, ये रुका हम लोग P Q S T P P Q S T P, ये लूप के लिए देते हैं अपन क्या किरचॉफ से लगाओ। फिर यहाँ से यहाँ गए अपन क्या हुआ -E1 अब यहाँ आ गए अपन करंट कितना बह रहा है मींस ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, ये ऐसा लूप का डायरेक्शन, ये ऐसा लूप का डायरेक्शन है, पर इस करंट डायरेक्शन को अपोज में है, therefore E1 प्लस I R प्लस ये कैपिटल R आया मींस I R इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा ये E1 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा मींस I R प्लस I R, ठीक है। मींस दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, ऐसे क्या करेंगे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस देगा, ये V इक्वल टू क्या है I into R, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अगेन हियर डिवाइड द इक्वेशन 4 and 5, divide equation 4 and 5। Therefore again this will give you the previous ratio E1 upon V, therefore again E1 upon V is equal to ये क्या होगा IR plus IR upon क्या IR, यहाँ I क्या है कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, therefore I into R plus small r upon IR means I get cancelled, और बचा क्या यहाँ पे E1 upon V is equal to capital R plus small r upon capital R। Here the capital R is the value of the resistance which is chosen from the resistance box, और ये क्या है small r, or is the resistance from of the internal resistance of the cell। So here you can write here that is the R upon R plus small r upon capital R, therefore you will get here the value 1 plus R upon capital R। पहला E1 upon V is equal to 1 plus R upon R, but लेकिन मुझे क्या चाहिए, but E1 upon V is given by L1 upon L2, this is your equation number 3, means comparing इक्वेशन कौन सा ये वाला, मींस दिस इज इक्वेशन नंबर 6, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 6। करिए कंपेयर इक्वेशन, यहां से क्या मिलता है E1 upon V is equal to कितना आया L1 upon L2, लिखो मींस L1 upon L2 is equal to ये क्या आया 1 plus small r upon capital R। मुझे क्या चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल चाहिए डिवाइडेड बाय द लेटर स्मॉल r, therefore here rearranging the equation you will get here the value of the small r, therefore क्या होगा L1 upon L2 minus 1 is equal to small r upon capital R। मुझे क्या चाहिए R चाहिए, therefore small r is equal to इधर जाएगा means R into what value L1 upon L2 minus 1, means this will be the value of the internal resistance of the cell, means internal resistance of the cell is equal to the R times R is the resistance from the resistance box, R times L1 upon L2 minus 1, where L1 is the balancing leg when K2 is open and L2 is the balancing leg when K2 is closed। So here this equation gives you the internal resistance of the cell, means this cell may be a chemical type or the mechanical type, Lagrange cell, Ganglion cell, and so on. Solar cells can be used. So here small r equal to capital R times L1 upon L2 minus
equation due to the internal resistance of cell. Internal resistance of cell. Okay, thank you so much.